मतलब कैसे कंट्रोल होने वाला है। जैसे मान लीजिए वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स व्हाट, कि आई एम द वन हु विल डिसाइड अबाउट माय करियर और एनी कोई भी डिसीजन, ठीक है, तो वो हो गया आपका इंटरनल। और अगर जो एक्सटर्नल फोर्स से जो कंट्रोल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यानी हाँ जो होगा किस्मत से होगा, नहीं होगा तो किस्मत से होगा, दिस इज ऑल अबाउट योर हर्ष, राइट। नीतीश सर से बात हो गई? ठीक है, तो ये है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कि कैसे कंट्रोल होता है। क्या आप इंटरनली कंट्रोल्ड हैं, यानी अपने आप को खुद ही आप कंट्रोल करने वाले हैं, या यू आर गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल मींस पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। अंडरस्टूड अनीशा? Yes, ma'am. Any more doubt? No, ma'am. Fine, then let's proceed further. कहाँ तक थे हम लोग? मैकियावेलियन तो हो गया था, हाँ ये पूरा हो गया था ना, मैकियावेलियन तो कंप्लीट हो चुका था। What is that? If anyone can explain? हुआ मैकियावेलियन? कि हमेशा जीतना चाहते हैं। Okay, but I want answer from you. सुनाई दिया था? और कुछ बोलिए, तो अभी प्रत्यय बोला, इसके अलावा कुछ? पढ़े नहीं है, कोई नहीं पढ़े क्या? तब तो फिर मैं एक्सप्लेन करके निकलते चले जाते हैं। मैं लिखवा रही हूँ, उसका मतलब क्या है? जस्ट फॉर रिटेंशन। लिखवाने का मतलब क्या है कि क्लास के बाद आप एक बार रीड आउट करें तो सब कुछ याद आ जाए क्लास में क्या चल रहा था। बट इफ यू आर नॉट रीडिंग देन व्हाट्स द यूज टू डिक्टेट? कोई जरूरत है फिर? इंश्योर कि क्लास में जब आए तो लास्ट का पढ़ के आइए, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। व्हाट इज सेल्फ स्टीम? हम लोग कितना 3 कैरेक्टर किए हुए थे। मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट वन वाज लोकस ऑफ कंट्रोल and then Machiavellianism, and then third one is self-esteem. Write down self-esteem. First understand self-esteem का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान। Okay, if we say in Hindi, it is आत्मसम्मान। ठीक है, तो ये self-esteem यहाँ कहने का क्या मतलब है, पहले समझिए फिर मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। self-esteem का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप लोग BBA करेंगे, ठीक है, MBA करेंगे, तो कभी बहुत सारा जॉब ऑफर आएगा, लेकिन आपका सेल्फ स्टीम क्या होगा? आई एम एन MBA, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव वाला काम क्यों करे? मैनेजर वाला पोस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। सटायर अपार्ट, बट व्हाट इज दैट कि हमारे पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, हमारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें जॉब चाहिए, ठीक है, जो खुद को अच्छा लगे। यानी सेल्फ स्टीम क्या है कि आप अपने बारे में कितना अच्छा या कितना खराब सोचते हैं, ठीक है। इफ योर सेल्फ स्टीम इज हाई तो आप ज्यादा का अच्छा करेंगे, इफ योर सेल्फ स्टीम इज लो देन इच्छा भी आपकी लो की होगी, इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग से ऊपर तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, तो दिस जॉब विल बी सफिशिएंट फॉर मी। मैनेजर का पोस्ट मिलेगा भी तो आपका सेल्फ स्टीम अगर लो है तो आप यही बोलेंगे ये मिल भी जाएगा तो हम कर नहीं पाएंगे। सो दिस इज नंबर 3 आपका सेल्फ स्टीम। सो राइट डाउन। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, write down self esteem. It is the extent up to which you are going log out जो भी क्लास में है। All right, it is the extent up to which people either like or dislike themselves, then it is the, repeat कर रही हूँ, it is the extent up to which people either like or dislike themselves. Done? Yes, ma'am. Next point, it is directly related to the, they like or dislike themselves.
up to which either like or dislike themselves, मतलब अपने आप को, ठीक है. Next point, it is directly related to, इसी में next point bullet point बना के लिखिए, it is directly related to the expectation of success, and on the job satisfaction, Next bullet point and the last statement, individuals with high self-esteem. Self-esteem का spelling I think motivation हो चुका है, esteem पता होगा. What is Maslow's motivation? आप पढ़ चुके हैं ना सब लोग. Self-esteem. Yes, ma'am. With high self-esteem, think that they have what it takes to succeed. They have what it takes to succeed. They have, क्या छूट रहा है? What is his name? Huh? Take what it takes to succeed. Full stop. So they. Ma'am, individual with high self-esteem think that after ma'am. That they have what it takes to succeed. मतलब आप जो लिख रहे हैं इस लाइन का मतलब है कि जिस इंडिविजुअल के पास हाई सेल्फ स्टीम होता है वो ये समझता है अपने बारे में कि जो सक्सेस के लिए रिक्वायरमेंट है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंट इन मी. ठीक है, अंडरस्टूड? जिसका भी क्वेश्चन था. Yes, ma'am. All right, proceed further. So they take more challenges while selecting a job. So they take more challenges while selecting a job. All right. That's it for self-esteem. Now, next point is, this will be fourth point, right? Fourth point is self-monitoring. Next personality attribute is monitoring, self-monitoring. What is self-monitoring? Word ही खुद मतलब अपने आप में बहुत सिंपल है. सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब खुद को मॉनिटर करना. ठीक है, तो ये पर्सनालिटी एट्रीब्यूट होता है कि आपको खुद को पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है. लाइक एग्जामिनेशन है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी चलते रहता है कि अभी नींद आ रही है, सोना है, गर्मी है, गर्मी लग रही है, अभी बाहर घूम के आते हैं. अंडरस्टूड? ये भी चलता है बैक ऑफ द माइंड, लेकिन खुद को मॉनिटर करना कि नहीं अभी एग्जाम है, फर्स्ट आई हैव टू स्टडी. अंडरस्टूड? दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग. सो राइट डाउन. Is the capability of regulating one's behavior. Is the capability of regulating one's behavior according to social situation. Then full stop. Individual with high self-monitoring skill easily adjust their behavior according to external situation factor. According to external situational factors. Then, and the last one is risk taking. Last personality attribute is risk taking. Then risk taking, again this is the simple word कि जिसमें ज्यादा रिस्क लेने का पोटेंशियल है वो एक तरीके से बोलिए ज्यादा फ्लरिश करते.
ठीक है, उनको कम इंफॉर्मेशन में क्विक डिसीजन ले लेते हैं। जो रिस्क टेकर्स होते हैं उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते इस टाइप के लोग, ठीक है, कम इंफॉर्मेशन तुरंत डिसीजन, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा सोच के लेते हैं उनको पूरा डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, उनको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है, दैट इज रिस्क टेकिंग। राइट डाउन, हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स make quicker decisions, use less information to make decisions, operate in smaller, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो रिस्क लेने वाले होते हैं, नंबर 1 आपका ये कि क्विक डिसीजन लेते हैं, नंबर 2 कम इंफॉर्मेशन में डिसीजन ले लेते हैं, एंड नंबर 3 इज ऑपरेट इन अ स्मॉलर और मोर एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन। किधर छूट रहा है? Operate in smaller and more entrepreneurial organization, कहने का मतलब कि ऐसे लोग ज्यादातर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, और यही वाइस वर्सा लिख दीजिए, ऑन कंट्ररी टू दैट, जो मैनेजर कम रिस्क लेते हैं, वाइस वर्सा बस लिख दीजिए, वो अंडरस्टूड है कि वो थोड़ा लेट से डिसीजन लेते हैं, दे आर डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है, एंड दे ऑपरेट इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट, फाइन। तो ये था आपका ऑल द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी। नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर टॉपिक टुवर्ड्स पर्सनालिटी थ्योरीज। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है थ्योरीज से ही क्वेश्चन आए, ठीक है। तो पर्सनालिटी में सारा जितना भी थ्योरीज, पर्सनालिटी का थ्योरीज जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें थ्योरीज में ये जानना जरूरी कि कौन सा थ्योरी किन्होंने दिया है और उस थ्योरी में किस चीज का डिस्कशन किया गया, मेन एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। तो राइट डाउन नाउ पर्सनालिटी थ्योरीज, write down personality theories. Main topic personality theories. अब तक क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग? What is personality is done, determinant is done, then attributes of personality is done. 3 टॉपिक अब तक कवर अप हो चुका है personality. Now the 4th one is personality theories, which is the important topic और सब topic of this chapter. ठीक है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस सेक्शन से बनेगा पर्सनालिटी, ऑलराइट। नाउ राइट डाउन पर्सनालिटी थ्योरी में पहले पर्सनालिटी थ्योरी का रिक्वायरमेंट क्या है वो जान लीजिए। राइट डाउन मेनी पर्सनालिटी theorists not only from the field of psychology but even from other fields, Many personality theorists, not only from the field of psychology, but even from other fields dealing with human behavior, also have carried on yes Anku, dealing with human behavior, फिर से रिपीट कर रही हूँ, many personality theorists not only from the field of psychology but even from other fields dealing with human behavior also have carried on researches यहाँ तक डन, carried on research लास्ट में एस, ठीक है, to find the answers to the questions. अब यानी कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ये पर्सनालिटी थ्योरीज को बनाना पड़ा, ठीक है, या देना पड़ा। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सनालिटी, लिखिए, यू नीड टू राइट व्हाट इज पर्सनालिटी,
टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो चाहिए ना, तो क्वेश्चन क्या क्या है वो, व्हाट इज पर्सनालिटी, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज पर्सनालिटी कंस्टिट्यूट, व्हाट डज पर्सनालिटी कंस्टिट्यूट, दूसरा क्वेश्चन। यानी एक पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट से क्या क्या आता है, ठीक है। ये आपके पर्सनालिटी थ्योरी में ये सब चीज का आंसर देने का कोशिश हुआ है। नेक्स्ट इज हाउ इज बिहेवियर गवर्न्ड बाय पर्सनालिटी, हाउ इज बिहेवियर governed by personality. That's why these personality theories has been given. How is behavior governed by personality? Done. So the first theory was given by Sigmund Freud. तो सबसे पहले आप नाम दीजिए थ्योरी का, psychoanalytic theory. Spelling will be P-S-Y-C-H-O, psycho, analytic, A-N-A-L-Y-T-I-C, theory dash दे करके, which was given by Sigmund, S-I-G-M-U-N-D, Sigmund Freud, F-R-E-U-D, F-R-E-U-D. लिखने से पहले समझिए ये थ्योरी में क्या बोला गया है। यहां तक डन? डन। अब समझने पे ध्यान दीजिए। ये जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने क्या डिस्कशन किया है कि एवरी इंडिविजुअल दो टाइप का पर्सनालिटी होता है, एक कॉन्शियस माइंड का, एक सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कभी भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी काम करते होंगे, जो कार्टून वगैरह देखते होंगे तो पता होगा, एक व्हाइट कपड़े वाले आती है फेरी और एक ब्लैक कपड़े वाला। हमारे मेंटल स्टेट का दो पर्सनालिटी होता है, कोई एक अच्छा सोचने वाला, ऑन द अदर साइड गलत आपको प्रोसीड करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पढ़ाई का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, अगर पढ़ाई करना है तो ठंडा है तो एक बैक ऑफ द माइंड ये भी बोला जाएगा कि भाई ठंडा है तो सो जाना चाहिए रजाई तान के, ठीक है। एक और पर्सनालिटी है हमारा जो ये बोलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड ने 3 टर्म दिया है, एक दिख रहा है कहां तक, one is id, second one is ego and third one is super ego, ठीक है। देखिए इड जैसे बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, कोई चीज मतलब तुरंत देखा उसको तुरंत चाहिए, चॉकलेट देखा हमको तुरंत चाहिए, रोना चिल्लाना शुरू। तो ये जो पर्सनालिटी होती है वो हमारा होता है अनकॉन्शियस स्टेट, ठीक है, दैट इज इड। जो हमारा अनकॉन्शियस स्टेज होता है, जो हम लोग ग्रेजुअली जब बड़े होते हैं धीरे धीरे ये इड को हम कंट्रोल करना सीखते हैं, यस और नो। अभी हम लोग क्या चॉकलेट देख के रोना शुरू करेंगे? ऑब्वियसली नो, लेकिन बच्चा लोग अभी भी करेगा, जो छोटे बच्चे हैं वो करते हैं। तो जो हम लोग का इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को जो सेटिस्फाई करने का जो वो एक ललक होता है, दैट इज इड, अंडरस्टूड। और एक ये ईगो होते हैं हम लोग को, ये अपना पर्सनालिटी है जो कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो सुपर ईगो है दैट इज आपका जो आपका सोसाइटी का जो एथिक्स होता है, नॉर्म्स होता है, उसको करने के लिए जो आपको एक तरीके से बोलिए प्रेरित करता है, ठीक है। जो आप दूसरा पर्सनालिटी बोल रहे हैं ना कि हाँ पढ़ना चाहिए, ठीक है, दैट वो अच्छा वाला जो पर्सनालिटी होता है, ये एंजल वाला सिंबल, ठीक है, ऊपर जो एंजल लोग के ऊपर होता है, तो दैट इज सुपर ईगो, जो हमारा नॉर्म्स, ये याद रहेगा, बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा सुपर ईगो है, कौन सा ईगो है, कौन सा इड है। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट यू आर एबल टू सी, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका सुपर ईगो स्टेट है, जो नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसका कल्चर वगैरह देखते देखते जो हम लोग ऊपर उठते हैं, तो दिस इज सुपर ईगो। और ये ईगो वाला स्टेट हुआ हम लोग खुद जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि इड ठीक है हमको अभी चॉकलेट चाहिए, लेकिन मान लीजिए हम लोग डाइटिंग करें तो क्या चॉकलेट लेना सही होगा? अभी सुपर ईगो वाला स्टेट बोलेगा नहीं एक भी नहीं खाना चाहिए। तो ये है रियलिटी वाला ईगो, क्या है रियलिटी वाला पोजीशन। आप जो डिसीजन लेंगे इन दोनों मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जो आप डिसीजन लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा खा लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं, दैट इज द रियलिटी स्टेट। यहाँ पे मेरा इड भी शांत हो गया, सुपर ईगो भी रह गया। तो ये जो आपका सिगमंड फ्रॉइड है यही 3 एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड, क्लियर? राइट डाउन फर्स्ट लाइन, इट इज बेस्ड ऑन the notion that based on the notion, it is based on the notion
मोशन में, हाँ मोशन, NOTI, मोशन नहीं, नोशन, अंडरस्टैंडिंग, NOTION, नोशन, नोस, मोशन नहीं है, नोशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, इट इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोशन, N है, N फॉर नेस्ट, N फॉर नाइट, अंडरस्टूड, Yes, ma'am. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट मैन इज motivated, man is motivated by unseen forces, by forces, then he is controlled by conscious and rational thoughts, conscious and rational thought. कोई भी सेंटेंस ऐसे ही नहीं लिखिएगा, समझ समझ के लिखिएगा, अदरवाइज ये प्रेशर बन जाएगा कि इतना लंबा चौड़ा नोट्स है, अंडरस्टूड। एक एक लाइन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोगों को, जब क्वेश्चन पूछेंगे पता चलेगा, ऐसा नो। इट इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस एंड रैशनल थॉट। आप जो सेंटेंस लिखे हैं उसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दे आर मच मोर मोटिवेटेड बाय अनसीन फोर्सेस रादर देन जो रियलिटी होती है, ठीक है, वो ये लाइन आपका लिखा हुआ, क्लियर। प्रोसीड, फुल स्टॉप के बाद द क्लिनिकल फाइंडिंग led him to conclude major motivating force in men was unconscious framework, full stop। मेजर मोटिवेटिंग फोर्स के बाद में motivating force in men was unconscious framework, full stop। This framework contains three aspects, though interrelated but often conflicting। और वो तीन एस्पेक्ट क्या है फर्स्ट बेंच, वो तीनों एस्पेक्ट क्या क्या है? वेरी गुड, फोकस ये था, आईडी नहीं बोलेंगे, इड बोलेंगे, ठीक है। तो आगे लिखिए सबसे, हाँ दे आर, वो लिख लीजिए इड, ईगो एंड सुपर ईगो, एंड स्टार्ट राइटिंग इड। This framework contains three aspects, though interrelated but often conflicting। ये तीनों interrelated भी है और एक्चुअल में conflicting ही है, सबकी मेंटालिटी अलग अलग है, so that's why conflicting, understood। इड का फुल फॉर्म नहीं, इड ही है वो, आईडी ही है वो, ठीक है, आईडी इड। सो इड के बारे में लिखिए, इड रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियस पार्ट, it represents the unconscious part, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जिधर जहां क्वेश्चन बन सकता है वो मैं अभी बता रही हूँ, अभी से फोकस रही है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन के आएगा कि इड का कॉन्शियस पार्ट से ताल्लुक है या अनकॉन्शियस पार्ट से, ठीक है। सो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अनकॉन्शियस पार्ट, ठीक है। इड हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ये इड को आप कंट्रोल करना सीखेंगे, ठीक है। सो इट इज अनकॉन्शियस पार्ट, राइट डाउन फर्दर, फुल स्टॉप। इट सीक्स immediate gratification for biological gratification, gratification, immediate gratification और satisfaction, ठीक है। for biological और intellectual, spelling INSTINCTUAL, instinctual need। what is instinctual need? मतलब जो बिना सोचे समझे बस किसी चीज की चाह जो होती है,
बायोलॉजिकल और इंस्टिंक्चुअल, INSTINCTUAL, इंस्टिंक्चुअल, ठीक है। नीड, इंस्टिंक्चुअल नीड मतलब क्या हुआ, जो कि बिना सोचे समझे कोई चीज की चाहत जो होती है, ठीक है, बिना उसके बारे में ज्यादा पता किए, ज्यादा उसके बारे में बिना जाने, जो नीड की जरूरत होती है हमारी, ठीक है, दैट इज इंस्टिंक्चुअल नीड। फर्दर राइट, फुल स्टॉप के बाद, एज एन इंडिविजुअल मैच्योर्स, as an individual matures, as an individual matures, he learns to control the id. He learns to control the id. As the individual matures, he learns to control the id. But even then, it remains a driving force. It remains a driving force throughout the life. Throughout the life. It remains the driving force throughout the life. ड्राइविंग फोर्स रहता है ना, जैसे ठीक है आप चॉकलेट वगैरह के लिए नहीं रोएंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं पापा से डिमांड तो खत्म होता नहीं है आपका, ठीक है, कभी ये साइकिल चाहिए, कभी वो बाइक चाहिए, तो दैट इज व्हाट यू आर राइटिंग। हाँ, इट रिमेन्स अ ड्राइविंग फोर्स बड़े होने के बाद भी, ठीक है। सो राइट डाउन अगेन, थ्रू आउट द लाइफ इज डन, and an important source of thinking and behaving, and an important source of thinking and behaving. Important source of thinking and behaving. Done. Yeah. Next is ego. Ego. Ego is the conscious or unconscious? Conscious. Right now, ego is the conscious and logical part of the human personality. Part of human personality. Conscious and logical part of human personality. ठीक है, जो भी डिसीजन हम लोग तर्क वितर्क करके लेते हैं, ठीक है, दैट इज ईगो इज माय ओन स्टेट, ठीक है। तो ईगो क्या हो गया, तो ईगो इज अ कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड इज एसोसिएटेड विद द रियलिटी प्रिंसिपल. Reality principle. One part of the human personality. Part of the human personality and is associated with reality principle. देखिए ये दोनों रियलिटी में ईड क्या हो गया, वो हाँ अनकॉन्शियस पार्ट है और बहुत ज्यादा ही बचपन है वो वाले ईड में, ठीक है, और मतलब जो आपको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ज्यादातर खींचा जाए, ठीक है। एंड सुपर ईगो की जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नॉर्म, ठीक है, लेकिन हमसे पूरा जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है, दिमाग ये है जरूरत से ज्यादा हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं, दैट्स द रियलिटी, ठीक है। ठंडा लगेगा तो रजाई लेना ही लेना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो ये दोनों स्टेट आपका अनकॉन्शियस वाला पार्ट है, लेकिन कॉन्शियस जो रियलिटी है दैट इज ईगो, कि थोड़ा जो मैंने कहा कि थोड़ा सा रजाई ओढ़ लेते हैं और थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, रजाई ओढ़ के पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे डाइटिंग का मैंने बताया कि ठीक है हम लोग पूरा एक कंप्लीट बार नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं चॉकलेट का, बस एक बाइट ले लेंगे, ठीक है। तो दैट इज आपका कॉन्शियस एंड रियलिटी प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई ईगो को हम लोग रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। उस स्टॉप के बाद आगे लिखिए, thus ego keeps the id in check, keeps the id in check through the realities of the external environment, reality check of, repeat कर रही हूँ, thus ego keeps the id in check through the reality of the external environment, then external environment through intellect and reason, through intellect and reason, through intellect and reason, full stop. Out of the functioning of the id, out of the functioning of id, out of the functioning of id and ego,
many conflicting मैम हाँ? मैम फंक्शनिंग के बाद out of the functioning of id and ego, many conflicting situation arise because id wants immediate pleasure. मैम बिकॉज के बाद तब If I'm allowing you, this is the result you are giving. Right for the कहाँ थे? Immediate pleasure, comma, while बिकॉज आईडी वांट हाँ? बिकॉज के बाद ईडी Because it wants immediate pleasure. It wants immediate pleasure. While ego dictates denial or postponement Ma'am, to a spelling. more appropriate to the more पोस्ट postpone करना, ठीक है, उसको कोई भी एक्टिविटी को बाद में करना, that is postponement. All right, to a more appropriate time and place, to the more appropriate time and place. Done? Right? Last line. Full stop के बाद. In order to resolve the conflict, the ego gets support from superego. To resolve the conflict, ego gets support from superego. ठीक है, अब सुपर ईगो क्या है वो जानिए. लिखिए सुपर ईगो. It represents social and personal norms. And serves as an ethical constraint. Constraint मतलब क्या? मैम रिपीट मैम. Wait, I'm repeating. It represents social and personal norms. And serves as an ethical सर्च serves as an SERVES, serves as an ethical constraints on behavior. Ethical constraint on behavior. Full stop. On behavior. इसका ethical मतलब क्या? जो समाज के अकॉर्डिंग सही या गलत का जो फैसला लेते हैं, तो ये सही है, ठीक है, ये जो हम काम कर रहे हैं ये गलत है. एथिकल कांस्टेंट मतलब अपने अंदर हम रुकावट एक तरीके से या बाउंड्री लाइन एक तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं. दैट इज एथिकल कांस्टेंट ऑन वंस बिहेवियर. अंडरस्टूड? प्रोसीड. फुल स्टॉप के बाद the super ego provides norms to ego. Norms to ego to determine what is right or wrong. To determine what is right or wrong. Full stop. However, the person is not aware of the working of the superego. And conscience is developed by, conscience spelling CONSCIENCE. Conscience is developed by
is developed by absorption of cultural values and norms of society Norms. of society. Done. So this was all about कौन सा theory? Personality theory. Attitude. All right. So ये था आपका psychoanalytic theory, which was given by